Our today's class is for 11th class. As you know, our subject is geology. We have discussed underground water in the previous class. Now, in this class, we will try to understand two types of underground water. What is what are the types of underground water? Number one is connate type water. That is the one type of underground water. And the next type is juvenile water. So, two types of waters, or we can say two types of water, is found within the earth's surface or subsurface waters. These are the subsurface water, connate water and juvenile water. So, now if we try to understand the first term, connate water is a type of water when sediments are deposited on the bottom of the sea. If we understand this in a simple way, this is sea, and under the water of the sea or bottom of the sea, the spaces between the sediments, these are sediments, and the spaces between sediments contain water. So, because they have pores, these sedimentary rocks have pores, or the spaces between the sediments contain water, which that water or the water is driven out. This water, when driven out by compaction, by the force of, when we exert the force to make it more denser, the particles come closer to each other. No doubt the water, due to compaction, the water is driven out, but still there remain some water within the pores or in between the sediments particles. So in between these sand particles or different types of sediments, still water remains there after compaction. So that little water, however, that little water still remain there within the sedimentary rocks. That water is known as connate type water. So it is always, or we can say usually, it is saline type of water because it is a sea water or ocean water and can be drawn out through the banks of these seas or rivers. So this is connate water. Next is juvenile type of water. Water that exists within and in equilibrium with a magma or water-rich volatile fluids that are driven from magma. So this magmatic water is released to the atmosphere during a volcanic eruption. So as you know, you have almost learned about the volcanic eruptions. During volcanic eruptions, three types of products come out from these volcanoes: solid, liquid, and gases. Among the three, liquid products also provide us water, which is a type of volcano, or that can be a fresh water, or that can be other types of water that exists within and in equilibrium with a magma or water-rich volatile material fluids that are driven from this magmatic source, from this conduit. When the water is driven, this magmatic water is released to the atmosphere. With the result, or during the volcanic eruption, we can get this water from the volcanic source. So this is a magmatic type of water, or we can say juvenile. The term juvenile is used. So juvenile type of water is get from the magmatic source. So if we try to understand in a simple way, ये जो कोनेट वाटर होता है, जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं सी के बॉटम में, समंदर के बॉटम में, या
ये जो रिवर होता है इसके बॉटम में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, स्पेसिस जो होते हैं सेडिमेंट्स के दरमियान, मुख्तलिफ टाइप्स जैसे डस्ट, सैंड, ग्रेवल्स, पेबल्स, बहुत सारे जो सेडिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के सेडिमेंट्स जो समंदर की निचले वाले तह में, बॉटम एरिया में जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब हम वाटर ड्रॉ करते हैं, आफ्टर ड्राइंग द वाटर, इस जो ये जो लेयर होता है सेडिमेंटल लेयर, जिसमें ये स्पेसेस होता है, इन स्पेसेस के बीच में पानी होता है, इन सेडिमेंट्स के स्पेसेस के बीच पानी होता है, जब हम वाटर इससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू कंपैक्शन, इस कंपैक्शन की वजह से, दबाव की वजह से जब पानी बाहर आ जाता है, लेकिन स्टिल देयर रिमेन्स अ लिटिल वाटर, इसके अंदर फिर भी थोड़ा सा बाकी पानी बच जाता है, इन सेडिमेंट्स के दरमियान जो जगह है फिर भी वहां पानी मौजूद रहता है इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, क्योंकि दे हैव द प्रॉपर्टी और कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एंड पासिंग द वाटर। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एक खासियत होती है, ये अपने अंदर जो पोरोसिटी का अमल होता है, पोर्स जो होते हैं इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स सेडिमेंट के दरमियान, उनमें ये पानी फिर भी होल्ड करते हैं। जब ये इनके अंदर पानी होल्ड कंपैक्शन के बाद भी तो कुछ पानी इनमें रहता है, जब वो पानी हम कभी निकालने की कोशिश करते हैं किनारों से, जब हम बड़े बड़े खड़े या छोटे खड़े या ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स डग करने की कोशिश करते हैं, खोदने की कोशिश करते हैं, तो उन सेडिमेंट्स के दरमियान पोर्स में जो पानी होता है वो बाहर निकलता है, उसी को हम कोनेट वाटर कहते हैं। यूजुअली ये जो वाटर होता है सेडिमेंट्स के दरमियान, ये सैलाइन, क्योंकि ये समुद्र की इसका सोर्स होता है, इसी की वजह से इन सेडिमेंट्स के दरमियान ये रह जाता है, तो ये सैलाइन टाइप होता है। जब हम बात करेंगे दूसरा टाइप जो सिंपल सा है, ज्यूवेनाइल वाटर, ये ऐसा वाटर होता है जो मैग्मेटिक सोर्स जहां पे भी हो, इसमें ये इन इक्विलिब्रियम विद मैग्मा, मैग्मा के साथ ये रहता है ये पानी, या वाटर रिच वोलेटाइल फ्लूइड्स जो इसके अंदर होते हैं, वाटर रिच मैग्मा के, इस मैग्मा चैम्बर के अंदर जब ये बाहर आने की कोशिश करता है, इसके अंदर वाटर रिच वोलेटाइल मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड बाहर आने की कोशिश करता है, वोल्केनो जिस तरह बाहर आता है इसी तरह, जस्ट लाइक द, जिस तरह आपने देखा होगा फाउंटेन, फाउंटेन की तरह ये पानी बाहर आता है, या कभी ये स्लोप भी लेता है, या कभी कभी फाउंटेन की तरह ऊपर चला जाता है, या सिंपल सा कहीं क्रैक में साइड में वॉलेटाइल मटेरियल जो हो, जिसमें वाटर रिच मटेरियल हो, वाटर रिच वॉलेटाइल फ्लूइड होता है, ये साइड्स में से, क्रैक्स में से, वेंट्स में से बाहर आता है। कहाँ से बाहर आता है? मैग्मेटिक सोर्स से बाहर आता है। और जब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं या रास्ता देने की कोशिश करते हैं, ये मैग्मेटिक वाटर एटमॉस्फेयर में अपने आप रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान एटमॉस्फेयर में जमीन की सरफेस पे वेंट की शक्ल में, क्रैक की शक्ल में, या बड़े लेग टाइप शक्ल में बाहर आने की कोशिश करता आता है बाहर एटमॉस्फेयर में, तो इसको हम ज्यूवेनाइल टाइप वाटर कहते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जिसमें हमने कोनेट वाटर और ज्यूवेनाइल वाटर से दो टाइप्स पढ़े हैं। जो हमारे ज़मीन के अंदर सब सरफेस वाटर्स है, उसके अंदर जो दो तरह के वाटर्स है, दो टाइप्स है, हमने आज इस क्लास में क्लियर किए।